Talha, before we go into this session and before I introduce our audience the topic, I would love to have you give your introduction and your journey at DevSing and everything that you do basically. Okay, Sham. Thank you, Soha, for having me. My name is Talha Mughal. I've been with DevZing for more than 7 years. I have joined as a software engineer. And fast forward, I was promoted to ATL, TL, then project manager. Right now, the current CEO of the company. Also, I'm leading three non-technical departments, including the culture. Also, I'm heading marketing and engagement. Also, I'm dealing with operations and branding department. So that's the journey so far for me. Yeah. Okay, that's great. So basically, you guys, the reason why we do these lives is because we want to tackle some topics that we get on a daily basis on our different social media platforms. And last week we put हम लोगों ने एक poll डाला था. And the reason why we did that is because we wanted the audience to pick and choose what they want to know about, and also I wanted to have the professional himself come and answer these questions. So a lot of people actually interestingly wanted to know about how can they make the career switch from belonging from a non-tech background to shifting to a tech related field. So very interesting topic, and I feel like Talha, since you are also heading our department, the marketing department, you're also heading the engineers and stuff. I feel like it's you are the perfect fit for this topic, and let's just start with a basic question, and then we'll also take the the things that audience have to say and their questions. So basically, let's just start. Okay, what do you think are the common challenges that people usually face on their way to shift their careers from belonging from a non-tech background and then also wanting to switch to a tech-related field? Right. So I must say this is a very interesting and very needy topic for now. Acha, most of the community, I believe it's local, so I would like to stick to Urdu. So basically, हमारा जो टॉपिक है आज का, how to convert and shift their careers from non-tech to tech, और ज़रूरत भी क्यों है. So going deep into it, first of all, I would say कि इस टाइम पे अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, नीड की बात करें, तो दैट इज़ कि हमें मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान. और जो हमारे हालात हैं, एक्सपोर्ट किसी और चीज़ में जो है वो पॉसिबल नहीं है. द ओनली थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ मैक्सिमम कैपेसिटी में, दैट इज़ आईटी एक्सपोर्ट्स. बिकॉज व्हाट आई बिलीव इन, व्हाट इज़ द रियलिटी इज़ कि टैलेंट जो है दैट इज़ ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो पाकिस्तानीज, दे आर वेरी टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग. लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. सो फर्स्ट थिंग्स दैट वी कैन डू इज़ we can polish ourselves, be it technical or non-technical people, कि we polish ourselves in a manner कि जहाँ पे हम अपनी कोई भी आईटी स्किल्स को सेल आउट कर सकें, सर्विस प्रोवाइड कर सकें बाहर. सो अच्छा, दूसरी चीज़ आपने मुझे पूछी कि हाउ वी कैन स्विच फ्रॉम नॉन टेक टू टेक एंड हाउ दैट कैन बी हेल्पफुल. तो वी हैव सक्सेसफुली रन अ बैच ऑफ 112 पीपल जिनका बैकग्राउंड किसी का जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से था, कोई केमिकल इंजीनियर था, कोई जो है वो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से था. ऑल्सो देयर वर सम पीपल जिनका जो है वो माइनर सीएस के साथ बैकग्राउंड था. The only thing I would recommend and suggest to everyone is कि focus on your basic problem solving skills. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हर बंदा दिन में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा होता है. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रही है, दैट इज़ दी ओनली थिंग जो हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है. दैट इज़ के जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ें बनती हैं वो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसकी बेस पे उसको सॉल्व कर रही हो. तो इफ़ वी आर गुड इनफ इन जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल कि हमारे पास करीम और ऊबर ऑलरेडी पाकिस्तान में थे. देन कम येंगो अभी रिसेंट आई. इससे पहले जो है वो गालिबन कोई ऐसी सर्विस थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जो आपको चूज करने देती थी कि आपने कितना फेयर जो है वो तय करना है. तो करीम और ऊबर दे डोंट अलाउ यू कि आप जो है वो रेट डिफाइन कर सको. दिस पर्टिकुलर कंपनी
वो आई, उसने ये ज़रूरत फ़ील की कि पाकिस्तानीज़ व्हाट दे वांट इज़ एक्चुअली नेगोशिएट करना। नेगोशिएशन इज़ द थिंग दैट दे वांटेड टू हैव। सो दे इंट्रोड्यूस दिस कि यार जो ड्राइवर है, जो कैप्टन है और डायरेक्टली जो कंज्यूमर है, वो आपस में डिसाइड कर ले कि कितनी अमाउंट जो है दे आर विलिंग टू लाइक ट्रैवल ऑन। सो ये एक मार्केट प्रॉब्लम थी, दैट पर्टिकुलर somebody has said it in drive. So InDrive has identified this particular problem कि इस पर्टिकुलर मार्केट की क्या प्रॉब्लम है, ऑलरेडी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे, तो दे जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जो भी इन ड्राइव का बंदा था, मे बी ही इज अ टेक्निकल पर्सन और मे बी ही इज नॉट, बट ही जस्ट आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम एंड स्टार्टेड बिल्डिंग अराउंड इट। तो ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इफ यू आर गुड इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, define what problem it is and what market you're going to target. That is the first thing that any solution is based on. अच्छा, अब बात आ जाती है कि आपने नॉन टेक से टेक में कन्वर्ट कैसे करना है और उसकी ज़रूरत भी क्या है। ज़रूरत सबसे बड़ी ये है कि इस टाइम पे ग्लोबली टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग जो हैं दे वुड बी स्कार्स बाय 2024। तो 2024 तक इन लोगों की जो है वो कमी फील होने लग जाएगी, सप्लाई चेन जो है डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई जो है वो कम होगी। डेवजिंग का अपना सोल पर्पस ये है कि वी वुड बी हैविंग लाइक 80,000 एम्प्लॉइज टेक्निकल बेस्ड बाय 2030। तो इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं रफली 24,000 से 26,000 मैक्सिमम पर ईयर। अभी इसमें से अच्छे और बुरे की मैं बात नहीं कर रहा। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू हैव कि हम जितने भी ज़्यादा लोगों को ये स्किल सेट सिखा सकें कि दे कैन सेल आउट देयर सर्विसेज। अगर वो अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं and they can do freelancing and they can do some gigs and whatnot and earn something good, that will solve a lot of problems. The first problem would be कि हम जितनी भी हमारी मिडिल क्लास tier है, we will uplift that tier, and then definitely comes along के poverty decrease होगी and चोरी चकारी कम होगी and every other thing. So that is the main motive why we want to shift from non-tech to tech and why we want to like discuss this particular topic. Yes, thank you. And I feel like that puts a lot of perspective to what we're talking about. And also, Asadullah asked us, "Ke, what is the main motive of the streaming?" So let me just clear it out for you guys. We want to answer all of your questions, especially if you come from a non-tech background. Okay, how can you guys be able to make a swift shift, and also why do you even want this shift? And Dalha just touched upon it. Okay, how much scarcity in future the industry can face, and how much important it is for you to have a adaptable mindset and also adapt these technical skills so that they are beneficial for you, your future, but also the anti landscape that is basically existing in Pakistan. And also, before we move forward to the next question, I would also want the audience to know that we are taking your questions and we are here to, solve your queries and, get insight from Talha on the things you guys are curious about. So please go ahead and, throw in your questions and we'll be tackling them one by one. Acha Talha, the next question that, I get a lot, and when we put out the poll also, so a lot of people actually DM'd me and they were like, "Hey, please let us know what so एक non tech का बंदा है, really just do not have any exposure, is very confused by all these codes and numbers. I would be confused too. So what is the technical skill that you would, or what is the approach that you would suggest to these people? Okay, this is what you do, this is how you adapt to this technical skill, and that's how you will be able to kind of get familiar with this kind of this field, this area, and then this is how you will go about it in the future." Right. अच्छा, that's a very a very good question और बहुत on point है। अच्छा, सीन सिर्फ इतना सा है कि बहुत सारे जो सी एस ग्रेड्स हैं दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट कि हमें क्या सीखना चाहिए, हमें मार्केट में क्या मिलेगा वगैरह वगैरह, इंटर्नशिप कैसे होगी, या स्विच कैसे करना है। अगर स्विच की पर्टिकुलर बात करें तो दैट इज़ फॉर नॉन टेक, हमारा आज का एजेंडा भी यही है। अच्छा, स्विच करने के लिए क्या ऐसी डायरेक्शंस हैं, तो आई विल गिव सम की पॉइंटर्स, सम आइडेंटिफायर्स कि कैसे यू कैन शिफ्ट फ्रॉम नॉन टेक टू टेक बैकग्राउंड। एंड वी हैव वेरी ओन सक्सेस स्टोरीज एज वेल कि जो इस टाइम पे वी हैव हायर्ड इन डेवजिंग जिन्होंने नॉन टेक बैकग्राउंड से स्टार्ट किया। वी गेव देम प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ 6 months एंड दैट वाज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जस्ट अबाउट के यू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड. सबसे ज़्यादा मसला ये होता है लाइक somebody has given like 4-6 years in their particular professional degree, मे बी सिविल इंजीनियर है कोई और उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया और राइट नाउ what they are earning is maybe 30-40 thousand per month and that is the max they can earn so far. एंड मैं ये सब की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दे आर माशाल्लाह अर्निंग गुड एंड दे शुड डू दैट. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर सच कि जहाँ पे 50-60, मैक्सिमम 70,000 और 2-3 साल भी हो गए अभी तक उसी पे स्केल पे दे आर स्टक. सो आईटी के अंदर और पर्टिकुलरली टेक फील्ड के अंदर हाउ दे कैन प्रोग्रेस एंड एक्सेल इज दैट कि वो इस लर्निंग एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करेंगे. लेट से अगर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की माउंटेन के ऊपर वो चढ़ गए हैं तो they should come back to the base camp and they should start learning from the very beginning in the IT. अच्छा, अब क्या-क्या सीखना चाहिए? अगला सवाल ये आता है कि हम क्या सीखें जी? हम किस प्लेटफ़ॉर्म से सीखें? Udemy is a very good platform. There are many free courses, पहली बात. दूसरी चीज़, खान अकेडमी, they are offering every course for free. Start with simple HTML CSS, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही सिंपल प्लेन सा पेज बनाना सिखा रहे हैं. जस्ट लर्न दैट कि HTML CSS क्या होती है, चीज़ें चलती कैसे हैं, लाइक CS 101 कि आपने एक्चुअली CS की तरफ आना है तो उसके जो हैं वेरी बेसिक कोर्सेज़ क्या होंगे. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लाइक एवरी अदर यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी इस टाइम पे हर एक डिप्लोमा के अंदर, हर एक डिग्री के अंदर CS के बेसिक्स सिखाते हैं. तो HTML CSS आई बिलीव कि हर बंदा जिसने प्रोफेशनल बैचलर्स की डिग्री ली हुई है, दे आर फ़ैमिलियर विद इट. देन कम्स कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 माह के अंदर अगर आपने तैयार होना है तो यू कैन बी अ फ्रंट एंड डेवलपर रेडी टू प्लग इन 3 मंथ्स. अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या है? फ्रंट एंड डेवलपर इज़ अ पर्सन हू कैन लर्न the highly paid and most demanded technologies as of today, including React, including Next, including Vue. So start with just like simple JavaScript. क्योंकि ये जितने सारे फ्रेमवर्क्स हैं, अगर मैं ये थोड़ी सी स्पेसिफिक टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि जो मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप जावास्क्रिप्ट की तरफ जाते हो एंड उसके बाद उसके किसी भी फ्रेमवर्क में जाना शुरू करते हो, बिकॉज इफ यू स्टार्ट विद द स्पेसिफिक और जनरल चीज़ें आपने सीखी नहीं, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी नहीं और आप चले हो कि जो है मैंने डायरेक्टली जो है वो जहाज़ बनाना है, तो मुश्किल होने लग जाएगी. तो स्टार्ट विद द सिंपल एटीट्यूड कि आपने बहुत ही बेसिक से शुरू करना है. इवन इफ यू नो समथिंग, स्टिल दोबारा से सीखना शुरू करें बिकॉज़ इंडस्ट्री इतनी तेज़ पेस पे जो है वो शिफ्ट हो रही है कि यू नेवर नो कि आपने जो आज से 4 साल पहले सीखा था वो रेलेवेंट भी है या नहीं. अच्छा, start with JavaScript, then move towards React in particular. If you know React, तो Vue भी सिमिलर है, Angular भी सिमिलर है, Next भी सिमिलर है. ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी क्योंकि JavaScript के फ्रेमवर्क हैं, they are very similar. Maximum it takes for you to be front end ready is 3 months, and that is tested and deployed. We have tested it, we have verified it, we have people as front end engineers जो केमिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से थे, उनको हमने 3 माह में तैयार किया और 3 माह के बाद we evaluated them definitely within these 3 months we evaluated them alongside as well. लेकिन after 3 months they are ready as good as somebody with a CS background, with a CS degree. डेफिनेटली उनको डेटाबेसेस का नहीं पता, डेफिनेटली उनको जो है वो बैकएंड का नहीं पता, बट अ पर्सन हु इज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर, दे वर कम्पीटिंग देम. सो 3 मंथ्स. अच्छा, ये मैं बहुत ना स्पेसिफिक कुछ टाइमलाइंस दे रहा हूँ. अब इस 3 माह के अंदर इफ यू वांट कि आपको बैकएंड भी आ जाए, वुड बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन दैट. आई वुड सजेस्ट कि फोकस ऑन लाइक जस्ट द फ्रंट एंड पार्ट फर्स्ट, कि 3 माह में आपने पूरा फ्रंट एंड जो है वो केटर कर लिया. नाउ कम्स कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है. जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल हैं मर्न में कैसे होगा, मर्न में कैसे होगा. तो व्हेन वी टॉक अबाउट मर्न, तो दिस इज बेसिकली कि आपके पास जो है वो बैकएंड की स्किल भी है. अ, अच्छा, तो अब यू हैव लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू हैव एनालिटिकल स्किल्स, आप जो हैं वो एक अच्छे जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए. प्लस आप जो है एक बेहतरीन सी यूआई यूएक्स बना सकते हैं और फ्रंट एंड की स्क्रीन्स लाइक द स्क्रीन वी आर सीइंग राइट नाउ, ये भी किसी फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाई होगी, राइट. तो यू कैन डिफाइन एंड बिल्ड दीज काइंड ऑफ स्क्रीन्स. आपने इस तरह की चीज़ें बना ली, बेहतरीन.
नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि इसको आपने बैकएंड के साथ कैसे जोड़ना है। अब बैकएंड क्या चीज़ है? बैकएंड वो चीज़ है जहाँ पे आपका सारा कोड जहाँ पे आपका सारा जो है वो काम स्टोर हो रहा है, आपका डेटा स्टोर हो रहा है एक्चुअली। तो डेटाबेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट बैकएंड। अच्छा, जितने सारे भी लोग हैं नॉन टेक से जो टेक में शिफ्ट हो रहे होंगे, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा डेटाबेस को सीखना। सीक्वल को सीखना या किसी भी पर्टिकुलर लाइक रिलेशनल या नॉन रिलेशनल डेटाबेस को सीखना। अब डेटाबेस सीखने के लिए देयर आर मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। W3 स्कूल्स बहुत बेसिक लेवल है जहाँ से आप शुरू कर सकते हो। W3 स्कूल्स आपको एक सिंगल क्यूरी से लेके मैक्सिमम डेटा सेट तक प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करोगे और बहुत एंड तक चले जाओगे। अच्छा, अभी जितनी सारी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं किसी पर्टिकुलर कह लें कि इंस्टीट्यूट को जो है वो कैसे कहते हैं बेचना नहीं चाह रहा, या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए नहीं कह रहा, बिकॉज़ व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये जितने सारे लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे ना, इनका मेन प्रॉब्लम ही यही है कि दे वांट टू अर्न मोर। अच्छा, अब वो कमाना चाह रहे हैं, और होता क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे पेड ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि आपको ये बेच रहे होते हैं कि यार हमसे जो है लाख 2 लाख में ये चीज़ ले लो। somebody wants to earn, उससे मज़ीद जो है वो लाख 2 लाख ऊपर खरीदना doesn't make sense to me. That's my personal opinion, right? So मैं बहुत ज़्यादा बात उन्हीं पे करूँगा जो पेड नहीं, फ्री कंटेंट है। तो W3 स्कूल टोटली फ्री है। डेटाबेस यू कैन टोटली लर्न फ्रॉम देयर। आपने डेटाबेस सीख ली, नाउ अब उस डेटाबेस को आपने बैकएंड के साथ अटैच करना है। स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स मे बी नोड, और मे बी किसी भी बैकएंड फ्रेमवर्क में मे बी रूबी ऑन रेल्स हो सकता है। अब आपने लेट्स से रूबी ऑन रेल्स की अगर पर्टिकुलरली बात करने की, आपने रूबी ऑन रेल्स पे फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखनी है, आपको फ्रंट एंड आ गया, 3 माह आपने लगा दिए। अब उसी फ्रंट एंड को एडवांस लेवल लेके जाना है कि अगर हम रिएक्ट की बात कर रहे थे, तो रिएक्ट को रीडक्स के साथ कैसे अटैच करना है, उसका डेटा स्टोर क्या होगा, फंक्शनल कंपोनेंट्स अटैच कैसे होंगे, बैकएंड पे एपीआई कॉल्स क्या भेजेंगे। अब ये जितनी सारी चीज़ें हैं, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने डेटाबेस को अनलॉक किया। डेटाबेस आपका अनलॉक हो जाता है रफली मैक्सिमम विद इन अ मंथ। अगर आप बहुत स्लो पेस पे चल रहे हो तो 1.5 महीना, लाइक 6 वीक्स मैक्सिमम आर रिक्वायर्ड, कि आपने अब डेटाबेस जो है वो इतना समझ लिया, सीख लिया, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी आ जाती है, जिसमें डी नॉर्मलाइजेशन एंड एवरीथिंग, लाइक टेबल बनाना, व्यू बनाना वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीज़ें 6 वीक्स के 1.5 माह के टाइम फ्रेम के अंदर आपको इतनी समझ आ जाती है जितना एक CS ग्रेड को आती हैं इन देयर डिग्री, क्योंकि आप क्रैश कोर्स कर रहे हो। क्रैश कोर्स ये होता है कि अब आपका फुल ध्यान इसी पे है, आप दिन में 8 घंटे सिर्फ इसी चीज़ पे लगा रहे हो। बट इफ़ यू आर वर्किंग, तो मे बी इन योर पर्सनल टाइम आप 4 से 6 घंटे तो एटलीस्ट इस चीज़ पे लगा रहे हो। तो ये जितनी सारी टाइमलाइंस हैं, ये इस चीज़ पे मैप कर रही हैं। अच्छा, डेटाबेस सीख ली, नाउ टुवर्ड्स बैकएंड। अब आपने बैकएंड का कोई भी फ्रेमवर्क पकड़ा, आपकी मर्जी का। रिएक्ट आपने हमने रिएक्ट से डिस्कशन शुरू की थी, रिडक्स पे चले गए। रिडक्स के साथ हमने नोड को अटैच करना है, वी कैन लर्न नोड, बिकॉज़ उसकी वजह से आपका एक मर्ज स्टैक पूरा हो रहा है। उसके बाद जो है वो क्या उसे कहते हैं, अगर आपने कोई और फ्रेमवर्क सीखना है, लाइक आपने एक फुल स्टैक का फ्रेमवर्क सीखना है, रूबी ऑन रेल्स बीइंग वन एग्जांपल, पाइथन जेंगो बीइंग अनदर एग्जांपल। तो पाइथन बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट लाइक इंग्लिश, लेकिन थोड़ा-सा जो है वो उसका टेक्स्ट चेंज है। अब ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए और इतना बनाने के लिए कि लाइक आप अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल लॉगिन की एप्लीकेशन बना सको। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने अपने आप को टाइमलाइन डिफ़ाइन करके देनी है और टाइमलाइन को फ़ॉलो करना है। आपने अपने लेट्स से अगर एक लॉगिन की एप्लीकेशन बनानी है जिस पे लॉगिन होके वो ये बता दे कि लेट्स से कोई भी यूट्यूब की ऐड वो वहाँ पे जो है वो प्ले कर दे, या यूट्यूब की कोई वीडियो वहाँ पे प्ले कर दे। सिंपल ऐप, आपने ये ऐप बनानी है, तो टू मेक दिस ऐप टोटली बाय यू, यू विल मैक्सिमम टेक 6 मंथ्स, जिसमें आपने फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हुए बैक एंड पे आए, और अब आपकी ये पूरी की पूरी ऐप रेडी टू बी डिप्लॉयड है। सो बीइंग अ फुल स्टैक, आप बिल्कुल शुरू हुए थे फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ टोटली फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, आपने रिएक्ट स्टार्ट की। उसके अंदर जो आपको चीज़ें चाहिए, रिएक्ट को यूडेमी से सीख लें तो भी बेहतरीन है। आप जो है उस चीज़ को खान अकेडमी पे जाएँ, वहाँ पे पूरे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। मूविंग टुवर्ड्स डेटाबेस, W3 स्कूल्स फॉलो करें, खान अकेडमी पे वापस कोर्सेज़ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़नी, हमें वीडियो कंटेंट चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डाल लें, क्योंकि उससे ज़्यादा ईज़ी वे में आप नहीं समझ सकेंगे और इवेंचुअली आपको भी डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी।
But sure, if you want to just follow video instruction, तो there is video content free of cost available. अच्छा, ये सारी वो बातें हैं। अच्छा, ये इसलिए मैं ये सारी बातें वो बता रहा हूँ जो हर किसी के एक्सेस में होंगी। एवरीबडी कैन एक्सेस देम फ्रॉम ईज ऑफ देयर ओन होम। सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर वो काम कर सके। सिर्फ और सिर्फ आपको एक माइंडसेट की ज़रूरत है टू शिफ्ट योर करियर। एंड वंस यू हैव डन दैट, अच्छा इसके साथ साथ जो एक चीज़ आपने ज़रूरी रखनी है ना, वो आपने मार्केट ट्रेंड्स का, मार्केट की डिमांड क्या है। ऐसी चीज़ भी नहीं लर्न कर लेनी जो आपके किसी दोस्त ने सीखी थी 6 साल पहले और वो अच्छा उसमें कमा रहा है, और आप ये समझे कि यार यही चीज़ जो है मेरी ज़िंदगी बना देगी। आपने मार्केट ट्रेंड्स देखने हैं। मार्केट ट्रेंड्स कैसे देख सकते हैं? लिंक्डइन के ऊपर अगर जितने सारे लोग अभी हैं, लिंक्डइन स्लैश जॉब्स के ऊपर जाएं, देखें आपकी रीजन में या जिस रीजन में आप काम करना चाह रहे हैं वो वहाँ पे मैक्सिमम जॉब्स किस टेक्नोलॉजी, किस फ्रेमवर्क या किस नीश की हैं। स्टार्ट विद देयर, वहाँ से शुरू करें, एंड स्टार्ट अप्लाइंग देयर एज वेल। गो इन इंटरव्यूज, इंटरव्यूज में जाएं, देखें लोग सवाल कैसे पूछते हैं। जिस तरह के वो सवाल पूछेंगे ना, दैट विल मेक यू रियलाइज कि यार आपको एक्चुअली में सीखना क्या है। क्योंकि वीडियो कंटेंट तो बहुत जेनेरिक होगा। वीडियो कंटेंट तो ऐसा है कि जिसके अंदर आप समुंदर भरा पड़ा हुआ है। आपने डिफाइन कैसे करना है कि यार ये चीज़ें मुझे आती हैं। अगर सिर्फ हम रिएक्ट की भी बात करें तो रिएक्ट में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स पे जाना है, क्लास कंपोनेंट्स पे जाना है, प्रॉप सीखनी है, स्टेट सीखनी है, नहीं सीखनी, क्या करना है। तो ये जितनी सारी भी चीज़ें सीखनी हैं, ये आपको मार्केट बताती है कि आप जिस मार्केट में जाने लगे हैं, वहाँ पे मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है। हमेशा गो विद द मार्केट रिक्वायरमेंट, बिकॉज़ इफ देयर इज़ अ डिमांड, देन यू कैन सप्लाई। और ये ना समझे कि यार अभी मुझे लेट्स से बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो मैं इंटरव्यू में कैसा परफ़ॉर्म करूँगा, कैसा परफ़ॉर्म करूँगी। गो इन इंटरव्यूज़, दैट विल मेक यू रेडी फॉर द टाइम, जिस टाइम पे आपके पास अब टेक्निकल एबिलिटीज़ सारी आ गई, तो आपके पास इंटरव्यू एबिलिटीज़ भी आ जाएँगी। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे लोकली मार्केट को नहीं देखना। हमें सिर्फ़ लेट्स से डेवलिंग में हायर नहीं होना, हमें किसी और आईटी फर्म में सिर्फ़ हायर नहीं होना, हमें इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी चाहिए। इंटरनेशनल क्लाइंटेल भी निकालनी है। तो मे बी सर्च फॉर द जॉब्स दैट आर मे बी इन यूएस, दैट आर मे बी इन यूके, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पे भी आपके आसपास हैं। योर ड्रीम जॉब, आप गूगल में काम करना चाहते हैं, सोचा है मैंने गूगल में काम करना है, इट्स नॉट समथिंग यू कैन नॉट अचीव। तो ये जितनी सारी जो हैं चीज़ें हैं, इससे आप लोग सीखेंगे कि आपकी डायरेक्शन क्या बननी चाहिए। राइट नाउ मैं बहुत ज़्यादा जेनेरिक बातें डेफिनेटली करूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेसिफिकेशन तब तक नहीं बन पाएगी जब तक आप लोग खुद ये डिफाइन नहीं करेंगे व्हाट यू वांट टू अचीव पर्टिकुलरली। लाइक समबडी वांट्स टू डू जस्ट क्यूए वर्क, किसी को सिर्फ क्यूए बनना है, तो यू हैव टू डिफाइन कि आपको जो है वो स्क्रम मास्टर वाली साइड पे जाना है, आपको सिर्फ क्यूए रहना है, आपको ऑटोमेशन सीखनी है, आपको साइप्रस सीखनी है, सेलेनियम सीखनी है, व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम। अगर डेवलपर साइड की बात करनी है तो यू वांट टू बी ए फुल स्टैक इंजीनियर और जस्ट द फ्रंट एंड डेवलपर और जस्ट द बैक एंड डेवलपर। अभी हम पर्टिकुलर बात करें नॉट द सीएस ग्रेड्स के लिए, हम बात करें फॉर द पीपल हु वांट टू शिफ्ट फ्रॉम नॉन टेक टू टेक। सो थोड़ी सी लंबी डिस्कशन है, लेकिन दिस इज अ फुल फ्लेज प्लान फॉर एनीवन हु वांट्स टू शिफ्ट देयर करियर इन 6 मंथ टाइम फ्रेम। 6 माह के अंदर अंदर वो कैसे अपने आप को फ्रॉम जीरो टू हीरो कैसे बना सकते हैं। एंड वी डेफिनेटली हैव सक्सेस स्टोरीज, वी डेफिनेटली हैव पीपल who are placed even in devsing and outside as well, कि जहाँ पे वो अपनी फ्रीलांस भी कर रहे हैं, जहाँ पे वो जो है वो कंपनीज के साथ भी हायर हैं टू हैव द मैक्सिमम एक्सपोजर। सो दिस इज नॉट समथिंग कि आप ये समझेंगे यार ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। दिस इज समथिंग दैट इज easily achievable if you have the right mindset of growth, if you have the right mindset of changing your career from non-tech to tech. So this is the complete plan. So plan is there. Now, if you have any specific questions, so I am happy to answer. Yes, I think that was a very expensive plan, Talha, and also coming from myself, not a tech person, but if I were to think about a switch, it would be really intimidating, and also with the world being the absolute pool of knowledge, you would really just never understand where to begin with. So honestly, what I've gotten from your answer is basically go ahead and explore, figure out what you want, and then you have the resources, have the can-do attitude, study the trends, and just get into it.
अच्छा, we do have like they'll have few questions, ठीक है? Mhm. अच्छा, one of the questions, I think वैसे तो it pretty your answer pretty much answered it, but one person was asking कि you know मैं tech background का नहीं हूँ, but I have a daughter with the tech skills. So how do I not feel demotivated when I have all these tech guys in front of me जिनको मेरे से शायद probably ज़्यादा knowledge है? So what would you say कि चलो switch बन गया, कर लिया, ठीक है, you've gotten into something. How do you stop the demotivation? राइट। सबसे पहले ना तो हैव दिस माइंडसेट कि आपकी जो जंग है ना, वो किसी साथ वाले से नहीं है, ये अपने आप से है। You are your only competition. Don't feel like the other person is my competition. That's the simplest answer I can give to anyone who feels कि यार मेरे साथ जो है वो 500 CS क्रेडिट्स हैं, इस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर मुझे जॉब क्यों मिलेगी, उनको क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज वो लोग ये सोच रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं आपको इसलिए मिलेगी बिकॉज यू वांट टू बी योर बेस्ट वर्जन, नॉट समबडी। आप जो है वो नेक्स्ट फलाना बंदा नहीं बनना चाहते, नेक्स्ट XYZ पर्सन को फॉलो नहीं कर रहे। यू वांट टू बी योर बेटर वर्जन एवरी डे। अच्छा, इसी चीज़ पे फोकस रखें कि आपने अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस करना है। छोड़ दें इस बात को कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। देयर आर एम्पल ऑफ जॉब्स, किसी एक बंदे के लिए नहीं बैठी हुई, वो आपके लिए भी जो है वो डेफिनेटली यू हैव टू बिलीव के रिस्क अल्लाह ने देना है तो जो आपके नसीब का है वो आपको मिलेगा। लेकिन ये एटीट्यूड, ये डीमोटिवेशन जो है ना कि यार मार्केट के अंदर ऑलरेडी इतने लोग हैं, मैं कैसे जाऊंगा, तो फिर वो यूनिवर्सिटीज़ ही हमें बंद कर देनी चाहिए अगर हम इस माइंडसेट के साथ जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज कि बाय 2024 देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ IT प्रोफेशनल्स, राइट? तो व्हेन वी से कि इंटरनेशनली सप्लाई चेन के अंदर स्लोनेस आ रही है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर ये नॉन टेक से टेक में जो कन्वर्टेड लोग हैं इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम पे तो जो है वो वी विल बी हैविंग एवरी अदर पर्सन that has like the very basic IT knowledge, right? So don't feel demotivated, don't demotivate yourself as well कि आप खुद ही को खुद से डिमोटिवेट करते रहेंगे, यार मेरे से आगे तो बहुत सारे हैं, मैं कैसे ही कर लूंगा। अगर ये एटीट्यूड है, definitely you cannot achieve what you want to achieve in your life. But if you have this attitude कि यार आई डोंट केयर, वो घोड़े वाला काम करें, घोड़े के मतलब वो लगाम डाली होती है, वो मतलब कनपटी लगी होती है, वो उसको सीधा दिखाने के लिए होती है। जगह छोड़ दे सारी डिस्ट्रैक्शन, तुमने सिर्फ सामने देखना है। ऑल यू हैव टू डू इज लुक फॉरवर्ड, डोंट लुक हियर एंड देयर, आसपास क्या हो रहा है, जस्ट रन। अपनी दौड़ में दौड़ो। तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि तुम आखिरी दौड़े हो या पहले दौड़े हो, तुम्हें अपने कल वाले रन से ज़्यादा बेहतर आज दौड़ना है। अगर कल आप जो है वो 1 किलोमीटर भागे, आज आपको 2 भागना है, तो आपकी जंग, आपका कंपटीशन आप खुद हैं। दैट इज दी ओनली मोटिवेशन एंड दी ओनली डीमोटिवेशन इज वेल। अगर आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, नो बडी एंड नो बडी कैन डीमोटिवेट यू। Definitely, and I feel like no matter like switch itself is a hard thing. बेशक वो आपकी career में हो या your personal life, taking initiative itself is a hard thing because you never know what will come out of it. It's more about your persistence and remaining really, solid on what you've decided on. Once you have that, once you've figured out, knowing what you know, like knowing what you need, sorry, I think it itself is a blessing. Stick with it and go ahead and achieve it because again demotivators बहुत ज़्यादा आते हैं. अच्छा, तला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दो दफ़ा आ चुका है कि बेसिकली दे आर आस्किंग कि डिजिटल मार्केटर की इंटर्नशिप्स डेवसिंग में है या नहीं है. If you guys don't know, Talha is also heading the marketing department in DevSing, so I would want him to answer that instead of me. Right. So digital marketing के लिए definitely reach out to maybe Soha directly, put in your resumes and we will call you. We always are actively looking for people who are aligned with our mission and who are good in what they do. So definitely there are openings, definitely there are plans for people. So sure, you can reach out. Yes, and also one thing is important कि आप लोग do keep in touch with our career page and also our social media. Whenever we have a job opening, we make sure that it goes all across our social media, and especially LinkedIn. वहाँ basically we deal mostly with our career options and jobs. So please feel free to visit these pages and also DM me, and I'll let you know.
उसके अलावा we have this question where they are asking Abdul Rafi Wahid कि data structures and algorithms, is it important? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। देखिए कोई भी चीज़ डेटा स्ट्रक्चर इज़ समथिंग कि जिसकी बेस पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डेटा स्टोर कराना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनाना है दैट इज़ लाइक लेमैन टर्म्स में डेटा स्ट्रक्चर ये है कि मुझे 10 लोगों के नाम स्टोर कराने हैं और एक साथ स्टोर कराने हैं, तो मैं अरे यूज़ करूँगा, अलग-अलग कराने हैं, मेमोरी के अंदर कैसे लेने हैं। आम ज़ुबान में जिसको हम रैम और हार्ड डिस्क लैपटॉप की ज़ुबान में समझते हैं, तो रैम के ऊपर मेमोरी कैसे कंज़्यूम करनी है, हार्ड हार्ड डिस्क एसएसडी इन चीज़ों के ऊपर, रॉम के ऊपर चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एल्गोरिदम इज़ समथिंग कि आपने अपने प्रोग्राम को यूज़ कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, उसका जो आपका प्रोग्राम है, वो एक्चुअली उसका एल्गोरिदम लगा क्या हुआ है। मतलब सर्च है, तो क्या 1,00,000 रिकॉर्ड में से हर एक को जा के चेक करेगा या नंबर की बेस पे चेक कर लेगा? दैट इज़ लाइक अ सिंपल एल्गोरिदम वी कैन से कि उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इसके बगैर तो आप कुछ करेंगे नहीं ना। डेटाबेसेस के अंदर आपके डेटा स्ट्रक्चर्स कवर हो जाते हैं। एल्गोरिदम इज समथिंग जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई ये आई एम नॉट सेइंग कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ज़रूरी नहीं है। इफ somebody wants to like have an advanced level course on that, that's a very good thing, that's a plus, so do that। बेसिक जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, अरेज, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, हैश मैप्स, की ट्रीज, बाइनरी सर्च वगैरह वगैरह, जो भी ग्राफ्स आपके, यू मस्ट नो कि ये कैसे काम करते हैं बिकॉज दीज आर गेटिंग यूटिलाइज्ड इन एवरी डे जॉब। तो ये तो आपको आने ही आने चाहिए। डेटाबेस के साथ ये चीज़ें सारी की सारी अटैच होंगी, डेटाबेस में स्टोर ही इनकी बेस पे होना है, तो ये ज़रूरी है। Yes, and also, guys, since this whole session, I believe, is packed with so much information and also a roadmap on how you can actually make the switch, please do find us again on our LinkedIn page. So, in case if somebody has missed any point or you're not really making pointers at the time, it's totally fine. You can always find this on our LinkedIn page. Acha, दूसरा question that somebody's asking, Mohammed Bilal Zubair. He's asking us कि sorry, I just lost the question. Acha, हाँ. Can you please guide how we can switch to cybersecurity from a non-tech background? This is very specific question, but like shed some light on it. सही है। अच्छा, ये वो बात है कि अगेन साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी पॉपुलर थिंग दीज डेज और बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन अच्छा, इसके अंदर ये वो वाली एडवांस लेवल चीज़ है कि जो सीएस ग्रेड्स भी आते हैं तो उनको पहले सीखना पड़ता है। तो फर्स्ट आपको पहला स्टेप लेना है, स्टेप बाय स्टेप चलें। मतलब डायरेक्टली जो है वो 100 एपिसोड पे नहीं निकल जाना। साइबर सिक्योरिटी इज़ समथिंग कि अगर कोई किसी का बिल्कुल नॉन टेक का बैकग्राउंड है और वो डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहा है, तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक बच्चे को जो है बंदूक पकड़ा दी है और अब वो फायर करे या उसको जो है मुँह में डाल ले। It's totally like that. So for cybersecurity, definitely you have to have some CS ka background. Yeah, you have not just CS ka background, like basic understanding of how this tech system is actually working. So पहले थोड़ी सी ये बेसिक्स ले लें एंड देन डेफिनेटली मूव, डेफिनेटली डू द साइबर सिक्योरिटी जॉब्स। उसकी तरफ ज़रूर जाएं इफ़ दैट इज़ योर cause of like that is something you want to achieve, that's a very good thing you can do in your life। तो साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएं, लेकिन बिफोर डूइंग दैट डेफिनेटली यू हैव टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ें एक्चुअली टेक फील्ड में चल कैसे रही। Yes. And also, guys, for a lot of you guys, they're asking के DevSync में job opportunities, marketing वाली भी पूछ जा रहे हैं और like technical वाली भी पूछ रहे हैं. So again, to make you guys clear, DevSync is always looking out for new talent and new people. But just make sure that you always give a look to our career page and our social medias. उसमें we are updating all the time. So please have a look at it and help yourselves out with that. अच्छा, very interesting question, and I feel like we can tackle on that as well. Is Anisa Said is basically asking कि जो corporate world है, why does it not consider freelancing as part of work experience? It's a little out of the topic question, but I feel like it's very interesting, and I hope we can tackle that. सही है जी। अच्छा, वी टोटली बिलीव के फ्रीलांसिंग इज़ द वे राइट नाउ, डेफिनेटली, क्योंकि इसकी बेस पे आप एक्चुअली तो पाकिस्तान में पैसे लैंड करा रहे हैं। तो एनी गुड कंपनी दे आर नॉट अगेंस्ट फ्रीलांसिंग, दे हैव देयर ओन प्लान्स कि वो कैसे फ्रीलांसिंग को अपने ऑफिस में करा सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ ये समझने वाली है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो ऑफिस टाइम के अंदर भी फ्रीलांस कर रहे हैं जिसके अंदर उनका ऑफिस का काम डिस्टर्ब हो रहा है।
So now the office clients, they're getting affected because person has their own personal gains in their personal projects, right? So that's why some companies they have this limitation कि आप जो है वो company hours में freelancing नहीं करेंगी या company के साथ जो है freelancing नहीं करेंगे. But many companies like DevZing, they have their own plans कि कैसे आपके पास अगर कोई अपना ज़ाती project आया तो कैसे we can do partnership with that, and we can have a model where you can run your own company within company. So um, at DevSync itself, we actually promote, being people who are with entrepreneur mindsets. So I think no company in their right mind would, neglect these kind of things. But just understand कि हमारे कुछ मसले ये होते हैं हम लोगों के कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा अनएथिकल भी हो जाते हैं. अगर कंपनी का काम है, हम कंपनी का काम छोड़ के ज़ाती कामों में निकल जाएंगे, उस काम की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा क्योंकि वहाँ वो हमारा पर्सनल पोर्टफोलियो बना रहा है, वो हमारी पर्सनल चीज़ों को जो है वो अपग्रेड कर रहा है. तो दैट्स व्हाई सम कंपनीज बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट they don't allow these kind of things. Yes, and also like one thing, being in DevSing, what I have been taught is that we are always promoting, a mindset where you become the leader. But also like to reach there are some practices, there are some protocols that everybody should oblige to, and that is basically, when you're working. Personal gains, you kind of have to establish those boundaries, and you have to prioritize. If your vision doesn't match with a company, then might be that company is not for you. But we kind of have to like follow these protocols, and they are there for a reason. Acha, again a very specific question था, basically अब्दुल राफे वही पूछ रहे हैं कि मर्न और पाइथन डीजेंगो, which one of these have the best job market? अच्छा जी, दोनों की अपनी नीश है, मर्न और पाइथन जैंगो. देखिए अगर आप बात करेंगे कि आपको ए आई एम एल सीखनी है, अगेन वेरी स्पेसिफिक थिंग व्हाट यू वांट टू डू. If you want to go towards AI ML, definitely Python is your way. If you want to do something just in like JavaScript frameworks, Mern is your way. So ये personal preferences हैं. We can not say आजकल अगर बात करें specifically आज की बात करेंगे, इस current scenario की बात करेंगे, तो AI ML की जॉब ज़्यादा हैं, पाइथन को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस है. लेकिन मर्न इज देयर beside it. मर्न भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स इन मर्न. सो ऐसा नहीं है कि वन इज़ बेटर द अदर इज़ नॉट. इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन कि आप पर्सनली क्या करना चाहते हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड योर एक्सपीरियंसेस. तो अगर आपकी एक्सपर्टीज़ मर्न में है, आप पाइथन सीखना चाहते हैं, वेरी वेरी गुड थिंग. डू लर्न न्यू थिंग्स. अपने आप को ना इस तरह से बनाएं कि यू आर ऑलवेज up for a change. Don't be in your comfort zone all the time. If you have learned Mern maybe 4 साल पहले और अभी तक Mern पे ही हैं, and you're not learning anything new, maybe you're not like going in the right direction. So have this capacity of adaptability and change in yourself कि आप कुछ भी न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू फ्रेमवर्क या कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है, यू आर अप फॉर इट. यू वांट टू लर्न इट फॉर योर ओन गुड डेफिनेटली, एंड इट विल पे यू बैक. जो भी कोई नई चीज़ आती है डेफिनेटली मार्केट अडेप्ट करती है उसको, एंड इफ़ यू नो इट बिफोर एनीवन एल्स, तो आपको जो है वो अर्ली बर्ड का उस पे जो है वो डेफिनेटली बेनिफिट होगा. Achha, so since we're like talking about the switch, or we're getting insights on कि tech में जाने के लिए क्या सीख सकते हैं, कौन से frameworks are important, market किधर जा रही है. I think one question that also comes to my mind, and I feel like people also want to know this, कि तो फिर जो नॉन टेक के जो लोग स्विच ले रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर द नॉन टेक स्किल्स दैट दे कैन लेवरेज व्हेन दे मेक द स्विच टू द टेक फील्ड. सो व्हाट डू यू थिंक, फिर उसमें सॉफ्ट स्किल्स भी आपके आ जाते हैं, जो नॉन टेक स्किल्स आते हैं वो भी आ जाते हैं. सो व्हाट डू यू फील लाइक कि उनको कौन सी लेवरेज है, व्हाट आर दे ब्रिंगिंग? अमेजिंग क्वेश्चन, जिसमें भी पूछा है कमाल सवाल है. अच्छा, देखें, जितने सारे प्रॉब्लम्स भी टेक फिक्स कर रहे हैं ना, वो टेक के प्रॉब्लम्स नहीं है एक्चुअली. वो प्रॉब्लम कोई ना कोई नॉन टेक से रिलेटेड ही है. लेट्स से किसी का फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस है और हम कोई मेडिकल ऐप बनाने जा रहे हैं, तो द पर्सन हैज़ दिस लेवरेज ओवर एवरीबडी एल्स कि उसको पता है कि यार फार्मास्यूटिकल के अंदर चीज़ें कैसे चलती हैं, कोई भी मेडिसिन बनानी है उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, चीज़ें रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करनी है. Every person has their own leverage, right? So अगर आपका कोई non tech का background है, if you are good in sales, you are good in communication. So client communication is something that is very much needed anywhere and everywhere in the world. So if you're a good salesperson, be it non tech or tech, तो आप जो है दोनों जगह पे एक्सेल करोगे कमाल किस्म का.
अगर आप टेक की तरफ स्विच कर रहे हो तो टेक क्लाइंट्स आप ज़्यादा जल्दी कवर कर सकते हो, टेक क्लाइंट्स को आप जो है वो चीज़ें बेहतर अंदाज में सेल आउट कर सकते हो, यू कैन सेल आउट योर एक्सपर्टीज इन मच बेटर वे। सो इट्स ऑलवेज अबाउट कि जो भी आपका बैकग्राउंड है, लाइक द पर्सन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड इट कि किस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के वो हैं, बट कुछ एग्जांपल्स अगर ले लेते हैं, जैसे हमने फार्मा की एग्जांपल ली, हमने सेल्स की एग्जांपल ली, तो जो भी नॉन टेक वाली साइड से इस तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली दे हैव प्रॉब्लम्स इन देयर नॉन टेक डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू टेक, दे कैन हैव लेवरेज ओवर देयर। ऑलराइट। ऑल्सो हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्लीज़ गाइड अस अबाउट, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन अ कपल ऑफ टाइम्स एट दिस पॉइंट, CRM डेवलपमेंट, they want guidance on that. Specify नहीं किया है, और हम सोहेल ने कि what they need specific guidance on, but CRM development. So if we could राइट, just go over that. सही है। तो सीआरएम डेवलपमेंट बेसिकली जो है वो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, इसके अंदर जो जाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली इट्स अ स्पेसिफिक नीश। अगेन आपने पहले जो है वो बेसिक लेवल चीज़ें कवर करनी है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं नहीं है। ये अगेन वही वाला सवाल है कि साइबर सिक्योरिटी में जाना है, सीआरएम में जाना है, किस चीज़ में जाना है। डेवजिंग ऑफर करती है नहीं करती, डेवजिंग भी ऑफर करती है जी, एग्जैक्टली करती है। तो ये सीआरएम कहाँ से सीखें, इसके ऑनलाइन टूल्स जो हैं दे आर अवेलेबल। आई डोंट रिमेंबर इट ऑन टॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल look for them and maybe I will post it on LinkedIn. सो अभी अगर एग्जैक्टली मेरे से पूछेंगे कि सीआरएम कहाँ से सीखना है तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट आई आई बिलीव देयर आर सम टूल्स, ओडो शायद इसका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन देता है। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं ओडो इसको देता है, एल्गो देता है, देयर आर कंपनीज दैट प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस एंड देयर डॉक्यूमेंटेशन। तो इस आई विल गेट बैक टू इट। Again, also, since ये session काफी jam packed है with information, so guys, please I encourage you कि if you think you missed on something, if you feel like you've joined midway, we will have this session on our LinkedIn. So have this, take this as a guide. Talha has mentioned multiple things from resources to guidance. It will be there, and you can always take benefit of that. अच्छा, अवैस आरिफ का क्वेश्चन था कि anything on IT sales process, how to do outreaching and how do you go about that? So IT sales process. तो जी स्पेसिफिकेशन ये है कि लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपने स्किल सेट को उस अंदाज में बयान करना है, कैसे आप लिंक्डइन पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। जॉब मार्केट ऑन लिंक्डइन इज़ अमेजिंग। इसके अलावा गो ऑन वेल फाउंड, द ओल्डर नेम वाज well found is a good thing. Indeed is better. Indeed combines all the jobs that are there in the market और उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे शो कर देती हैं। अपवर्क से है वो, जहाँ से भी है, एनी प्लेस related to that. तो IT sales के अंदर if you're particularly asking about BD portion, तो that's heaven for them. अच्छा, आबिद हुसैन साहब ने एक सवाल पूछा हुआ है, आई थिंक इट्स देयर सेकंड क्वेश्चन, आई सी इट बिफोर एज वेल, के डू यू हैव ऑफिस इन दुबई? यस आबिद साहब, we recently have opened our office, the first office in Dubai, and right now we are looking forward to having physical presence there. As we are talking, our team is looking out for actual physical office there. We have already hired 4 to 6 people, the sales people there in Dubai. So keep in touch and keep following our career page if you want to like have some career advice. ठीक है जी। Yes. Also, there are a lot of more questions actually. Interestingly, very काफी ज़्यादा comments हमें आ रहे हैं, काफी ज़्यादा लोग questions पूछ रहे हैं. अच्छा, I feel like we've gone over every little thing थोड़ी थोड़ी करके, but one thing that जो कि I feel like is important, even though हमने उस पर थोड़ा सा touch किया था, but let's just talk about the misconceptions. क्या misconception जो generally होती है लोगों को टेक बैकग्राउंड, टेक में स्विच करते वक्त, दैट कैन प्रॉब्लम लाइक मिसकंसेप्शंस आर थिंग्स जो कि आपको काफी चीजों से रोक भी सकती हैं. सो you are also stopping yourself from entering into the door that might open a lot of opportunities for you. So if there are some misconceptions that you have seen, because you interview a lot of people, you've seen, if there are some misconceptions that you have seen people having, what it is and what would you suggest कि इनसे दूर रहें? Right.
So I would answer this by saying that there is 100% rejection for all the chances you don't take, right? जो चांस आप नहीं लेते ना, उस पे आपको रिजेक्शन ही है। तो सबसे पहले ये अपने अंदर से फ़ियर ऑफ रिजेक्शन निकालें कि यार मैं पता नहीं काबिल हूँ या नहीं हूँ, मुझे ये जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, मुझे जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले खुद को डिमोटिवेट करना बंद करें, सबसे पहले खुद पे यकीन करना शुरू करें। यहाँ पे किसी ने दोबारा से ये सवाल पूछा है कि कैसे जो है वो मैकेट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड से हम आ सकते हैं। तो अगेन ये वही वाली बात है कि यू जस्ट हैव द राइट एटीट्यूड, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्या सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, सब बात की बात है। डिफाइन यू वांट टू डू समथिंग, डिफाइन योर व्हाई इन लाइफ, योर कॉज इन लाइफ, दैट्स इट। सबसे पहले डिफाइन कर लें। अच्छा, उसके साथ जो है ना, सिर्फ आपकी ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, इफ़ यू से आई वांट टू बी एन आईटी एक्सपर्ट, दैट्स योर विश, श्योर, आई रिस्पेक्ट दैट। बट इफ़ यू से आई वांट टू बी एन आईटी एक्सपर्ट इन फ्रंट एंड, that's some specification. If you attach with it, okay, I want to be front end engineer specifically in React by maybe March 2024. Now it's a goal that you have set for yourself, right? So now it's no longer a wish, it's a goal that you want to achieve in this much time. Now write down all the things, pen down everything that you would do to achieve this particular goal. And don't say कि यार अच्छा मार्च में नहीं होगा तो अप्रैल में कर लेंगे, नहीं. Give yourself some tight deadlines and stick with them. That is the only thing that can and or cannot allow you कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. Somebody, so this is like this is my last statement on this, based on कि आपकी जंग जो है ना वो किसी और से नहीं है. डोंट फील कि मार्केट में कौन बैठा हुआ है, मार्केट में कौन नहीं बैठा हुआ. इंटरव्यू लेने वाले जो हैं दैट ओनली बेट ऑन पीपल रादर देन देयर स्किल्स, इस बंदे का जो है वो लर्निंग एटीट्यूड भी है या नहीं, ये खुद भी मोटिवेटेड है या नहीं. देखें, वी इंटरव्यू लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, राइट? व्हाट वी सी एक्चुअली इन देम इज के यार कैन यू एटीट्यूड है, बिकॉज एवरी पर्सन हु इज कमिंग विद द सीएस बैकग्राउंड, उन्होंने लर्निंग तो की थी, उन्होंने सीखा तो था, लेकिन क्या दे हैव दिस एटीट्यूड ऑफ लाइक अनलर्न एवरीथिंग एंड लर्न फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? That is the only requirement every interview and any interview have while they are doing it. So मैं बस इसी नोट पे इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा कि डोंट फील कि आप जो हैं वो पीछे रह गए हैं. आप पीछे रह गए हैं सिर्फ अपने आप से. If you work on yourself, if you want to like achieve anything in your life, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जंग कर लें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं. ये सारी जो है ना ये बिला वजह के ब्लॉकर्स और ये सारी बातें कि भाई मुझे ये नहीं आता, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मैकबुक होगा तो काम होगा, मेरे पास फलां चीज़, ये सारे जो है ना हीले बहाने हैं. इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, इन चीज़ों को छोड़ देंगे, अपने आप को टाइमलाइंस देंगे, अपने आप को टाइट बाउंड्रीज देंगे, तो ही कोई चीज़ अचीव कर सकेंगे. अदरवाइज हमेशा यही कहते रहेंगे कि फलां का बेटा ने ये कर लिया है तो फलां ने ये कर लिया है तो फलां ने ये कर लिया है, हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे. These are all lame excuses. I'm a live example of it. I have done it from the very root level. This is not something I am inherited with. So are you. If you feel कि आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया क्योंकि आपके पास कुछ था नहीं, तो फिर आप गलत हैं. Getting born with having nothing is not your issue. But if you are, dying doing nothing, that's your that's your problem. So that's it from my side, G. I am very thankful to you for having such an amazing audience. Or I'm like, मुझे पता भी नहीं चला घंटा कैसे गुजर गया. This is Yes, thank you so much, Talha, for your time. And also, like, I was about to ask you for the ending note, but you gave it all yourself. So, thank you so much. And also, thank you so much for interacting with the comments and everybody that's basically commenting. बहुत ज़्यादा interactive था, and so many questions. It gave us so much context to talk about. And Talha, you providing the context was perfect. And also, like, if I have to say something, I would say, okay, again, can do mindset is going to make you do something and put yourself out there, show up on interviews, even if you have nothing, at least just show up, study the market, and kind of like get the insight कि लोगों को चाहिए क्या, companies demand क्या कर रही हैं, because again, if you don't put yourself out there, you will never know what's out there basically. So okay, thank you so much, Talha, and thank you so much everybody who commented, and also you are encouraged to comment regardless, like है या नहीं है,
previous lives के नीचे भी comment करें. We'll always go ahead and answer your questions. And if you want something, personal advices, we are always available on our LinkedIn. So please kindly DM us. We'll answer your queries, and we are always welcoming, questions and young people, and all of the things they're curious about. Again, thank you so much, Talha. Thank you so much, everybody. We'll be ending the live session here. Inshallah, we'll meet you soon with a new guest, new questions, and everything. So have a good evening, everybody, and thank you so much.